Good morning everyone. So guys, in this video we'll see what is ExtentReport and how to generate HTML report using ExtentReport. Okay, we have already talked about how to generate TestNG report. जब हम कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली TestNG एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है and that is in HTML format, but it is not in Reach UI. It's not in a Reach look and feel. So that's why ExtentReport का यूज़ जनरली कंपनीज के अंदर होता है. So ये सेशन को मैंने दो वीडियो में डिवाइड किया है. In the first video we'll talk about how to generate ExtentReport. We'll see that part in a single class file. एक टेस्ट केस के अंदर हम देखेंगे, and in the second video I will show you by creating three different test cases in one project, and we'll see how to generate ExtentReport. Alright, so I'm creating a Maven project and we'll add dependency. ExtentReport. Part 1. Alright, this project name is Part 1. Okay, so we need to add three dependencies. One for Selenium, second for TestNG, and three, that is ExtentReports. Okay, so I'll open mvn repository.com. This is already open. Okay, and we need to copy the dependency. See, this is the dependency. So the name is, just a second guys, first of all let me type Selenium over here. That is Selenium Java. I'm taking the latest version of Selenium, that is 4.2.2. Copy, and I'll paste in pom.xml. Let me increase the font size. Alright, so Selenium dependency is added. If I press Ctrl S, then mvn repository Maven dependencies library file is there, and we can see all the jar files of Selenium. Okay, second is TestNG. TestNG. Alright, Ctrl S. And third one is, that is ExtentReports. Yes, Nikita. No, we'll see that part. Just hold on. You will understand this part. Guys, in TestNG हमको कोड नहीं लिखना पड़ता. We don't need to write a code if you want to generate report in TestNG, because after execution, when you refresh your project, automatically test output folder is generated, and where you can see the HTML file of the report. But in ExtentReport you have to write a code. There are three classes you need to remember, and with the help of that three classes report generate hoga. So just wait, you will understand in some time. Please hold on. Okay, so we have added jar files. Okay, now I'm creating a package, test cases. Okay, test cases. Alright, and there is a class generate extent report.
Fine. Make sure you don't need to check the main method. Alright. Now I'm creating one method. And that is annotation @test. ओके सो गाइस, अभी जैसे मैंने आपको बताया 3 क्लासेस है जिसके आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे. फाइन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल क्रिएट object of first class that is called extent spark reporter. This is the class, so I'll create an object of this class. Spark, it's not spark, sorry guys, spark. If you want to see the documentation, you can simply refer the website called ExtentReports.com. ExtentReports.com, and they have provided documentation. Okay, ये वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बनाया हुआ है, but earlier we used version 2 and 3, but now we have got the latest version, that is 5. और version 2 3 में class अलग था, that was extent HTML reporter, but in version 5 there is a class called extent spark reporter. Okay, so when you scroll down you will see that extent spark reporter class is there, and there is an object of the class, and here you need to specify the location where you want to generate your report. Okay, so I will mention the path over here. I want to generate report in this particular package. I'm creating a folder with the name reports. Okay, so I will provide the path over here, /src main /resources/reports. Test results.html. Okay, fine. Now I will import it. Alright, so this is step number 1. ओके, नाउ जैसे ही आप रिपोर्ट जनरेट होगा, रिपोर्ट का नाम क्या होगा, दैट विल बी testresults.html. सो ये जो html फाइल क्रिएट होगी, उसका डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको क्या रखना है, ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसका टाइटल आपको क्या रखना है, रिपोर्ट का नेम क्या रखना है, थीम, यहाँ पे 2 तरह की थीम है ये रिपोर्ट में, वन इज अ स्टैंडर्ड थीम एंड सेकेंड इज अ डार्क थीम. तो आपको कौन सी थीम इसमें सेट करनी है, you need to specify that part. Okay, it is not mandatory, but if you want you can mention that part. So for that you need to write this line, reporter dot config dot set document title is a method, and you can provide the method, let's say test reports. Okay, another method that is called set report name, set report name, and the report name is your project name dash test results. Okay, you can give any name. Okay, and you need to set the theme, आपको standard theme चाहिए या dark theme चाहिए, that also needs to be mentioned. So theme, so there is a class called theme, and there is a static method in the class called dark. Okay, so these 3 lines again I'm repeating again, these 3 lines are not mandatory. If you don't write it, that is absolutely okay. Okay, now so the step number 1, class number 1 जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. Okay, after that there is one more class called ExtentReports. So आपको ExtentReports क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. So ExtentReports report equal to new ExtentReports. Okay, and with the help of this you need to attach report dot attach reporter,
एंड ये रिपोर्टर आपको अटैच करना पड़ेगा ये रेफरेंस के साथ, राइट. दिस इज अगेन कॉमन लाइन. ओके, जो रिपोर्ट जनरेट होगा उसमें आपको कोई पैरामीटर और उसकी वैल्यू सेट करनी हो, जैसे कि आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट कौन सा है, आप कौन से ब्राउज़र पे टेस्टिंग कर रहे हो, हु इज़ द टेस्टर, हु इज़ द डेवलपर, ओके, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर टेस्टिंग, आप कौन सी टीम में काम कर रहे हो. तो अगर आपको इस तरह की और वैल्यू सेट करनी है, अगर आपको पैरामीटर वैल्यू और सेट करना हो, तो उसके लिए यू कैन राइट डाउन रिपोर्ट डॉट सेट इन्फो, सेट सिस्टम इन्फो, जिसमें देखो स्ट्रिंग के एंड स्ट्रिंग वी, के मतलब की, वी मीन्स वैल्यू. So let's say I'm writing environment over here and the value is I'm testing on QA environment. Okay. Second, if you want to mention the specific name on which, let's say, or you can say team name, your team is a team A, and your name, okay, tester name. So you can mention your name over here. Suppose here I am writing Tanmay. Alright, fine. So again, this is not mandatory. Okay, if you don't write it, that is okay, nothing will display. अगर आप मेंशन करोगे तो वो रिपोर्ट में क्लाइंट को जब आप प्रोवाइड करोगे तो क्लाइंट कैन ऑल्सो सी दैट दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन QA एनवायरनमेंट and it is done by team A and the author is the specific name you have mentioned. All right, and step number 3, through that your test will create. अभी जब आप टेस्ट केस लिखोगे ना, तो उससे पहले आपको एक लाइन मेंशन करनी है, एंड दैट इज रिपोर्ट डॉट क्रिएट टेस्ट, just a second, report dot create test, and here you need to provide the name of your test case. Suppose this is your test case 1, and we'll see what this method is returning. This method is returning class called ExtentTest. So here I will write down ExtentTest is equal to this. Okay, so this is also a class. तो मैंने आपको क्या बताया, there are 3 classes you need to remember. Class 1, that is Extent Spark Reporter, class number 2, that is Extent Reports, and class number 3, that is Extent Test. Okay, why we are writing this line? Okay, what is the importance of this, and what will be the output of this line? You will understand in some time. Hold on guys, and this is video 1. वीडियो 2 में यही पार्ट मैं आपको अलग अलग क्लासेस में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा with testng XML file. Okay, so you will understand that, and in video 3 I'll show you how to attach the screenshot in the report. Okay, so you will understand. तो आज के सेशन, अभी आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ कि जब आप रन करोगे then what will be the output and how the report will look like. Alright, so once you have defined this, then you can write down test dot log, and you need to mention status is a class, and in this class there are different methods. One is a fail, info, pass, and skip, and warning. See, these all methods are defined over here. You can see that in the documentation part. See, info, pass, warning, skip, and fail. So you know that if you want to provide a simply information about your steps, and pass is generally used if you want to pass your test case. This is just for a warning. Skip will be used if you want to skip your test case, and fail will be used if you want to deliberately or you are failing your test cases, right? So तीनों का use करके देखते हैं. Status dot I'm writing pass over here, or I will write down info, and you can provide your message over here. Let's say checking test case, or I can say that statement 1. गाइस, ये वीडियो में मैं आप सिर्फ इतना ही मेंशन कर रहा हूँ, बट वीडियो 2 में you will see that I will write down the actual logic and I'll show you how to generate report. Okay, then let's write down thread.slip. 2 seconds.
and this is statement 2, and then 1 second, statement 2. Okay, and after that I want to simply write down that this test case is pass. Okay, and I'll print a message, test cases passed successfully, test cases executed successfully. Alright, so this is my test case number 1. Alright, I can have like multiple annotations and I can write down, but if you want to make your test case fail, then you can write down this statement again. Okay, and this is your test case 2, and let's say 2.1, 2.2. Alright, and I want to write down test cases fail over here. Alright, there is something wrong, an expected result in actual result. Alright, so this is test case 2, and let's say I have another test case, that is test case 3. Test case 3. So here I want to simply skip my test case को मुझे skip करना है. For that I will use the method called skip. Skipping test case. Alright, okay guys, hold on. सेकेंड वीडियो में एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा स्क्रिप्टिंग एक्चुअल में करना कैसे है. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि लाइक यू नो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस. तो आपको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए 3 क्लासेस ऐसे डिफाइन करने पड़ेंगे, एंड देन द रिपोर्ट विल बी जनरेटेड. मैक्सिमम लोग ऐसा बोलते हैं कि इट्स बेटर इज अ टेस्ट एनजी रिपोर्ट, वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एल्स, सिंपली रन करेंगे और वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो इसके जैसा भी एक और रिपोर्ट आगे हम देखेंगे, दैट विल बी एल्योर रिपोर्ट. ओके, आई विल शो यू in upcoming sessions, right? So आप उसको भी implement कर पाओगे. For that you don't need to write a code if you want to generate report like this. Okay, now आगे next session में हम ऐसा करने वाले हैं कि यही report के जो common code है ना, this is my common code, will define in another class. Okay, and that class will be our parent class, and remaining class will be our child classes. I mean all your test cases will be your child classes, and the parent class in which will define all this common codes. Okay, so next session में आपको clear हो जाएगा, next video में आपको clear हो जाएगा. So let me run this. Okay, one more important thing. Once your test is executed, it is important to write down report dot flush. Guys, अगर आप report dot flush नहीं लिखोगे, then report won't be generated. Okay, report generate नहीं होगा. Make sure this is very important. If you have written everything, but if you have not ended your test case with this line, then report will not be generated. So it is very, very important. Alright, so let me run the test case and see the output. Fine. So guys, here you can see that when you see the report, and that will be generated inside reports folder. For that you need to refresh your project, and see that test results.html is a file. Okay, the same name, the name we have given, we already given the name, and here is the report. Just open it in a browser. I'm launching it in a Chrome browser. So you can see that there is a theme red. You can see that your test case which is failed, that is in pink color, that is yellow and green. So if test case 1 को हमने green किया है, test case 2 को हमने fail किया है, test case 3 को हमने skip किया है.
ऑल राइट, एंड द थीम इज अ डार्क थीम एंड दैट्स वाई इट इज अ ब्लैक कलर. अगर आप स्टैंडर्ड थीम रखोगे देन आउटपुट विल बी इन अ वाइट कलर. All right, now you can see that this is the title of the web page, test reports, and this is my document name. This is document name and ये theme है, that is dark color theme. Okay, now आपको question होगा कि ये जो हमने mention किया है, this 3 lines we have written, I mean environment, team name, और ये कहाँ पे होगा. So report में जब आप यहाँ पे click करोगे chart icon पे, ओके, सो यू कैन सी दैट टेस्ट केस इतने बजे स्टार्ट हुआ, टेस्ट केस इतने बजे कंप्लीट हुआ, 1 पास्ट 1 फेल, एंड हियर यू कैन सी दैट skip is 1, green pass, that is 1, and fail 1. You can also set log event, this is info, how many lines we have written in info, 6 lines. Okay, so ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो गाइस. बेस्ट पार्ट इज दैट टाइमलाइन. सी दैट फर्स्ट टेस्ट केस को कितना टाइम लगा, सेकेंड टेस्ट केस को कितना टाइम लगा, एंड टेस्ट केस नंबर 3 को कितना टाइम लगा. एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू कैन सी द सिस्टम एनवायरनमेंट इन द टेबल फॉर्मेट, एन एनवायरनमेंट ऑन विच वी परफॉर्म द टेस्टिंग, दैट इज अ QA, टीम इज टीम A एंड टेस्टर का नेम है तन्मय. फाइन, एंड ओवरऑल पूरा ये रिपोर्ट यहाँ पे इस तरह से जनरेट होगा गाइस. सो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट रिपोर्ट. अभी आपको क्वेश्चन होगा ये टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 क्यों आया, बिकॉज लाइक सी यहाँ एक्सटेंट टेस्ट वी हैव रिटन टेस्ट केस 1. सो दिस इज द guys, just a second, this part, okay, this part is your test case number 1. So this information, statement 1, statement 2, and test case is executed successfully. You can see that statement 1 along with the timestamp, statement 2 timestamp, and this is test case is executed successfully. Same way when you click on test 2 is failed, so यहाँ fail आ जाएगा. statement 2.1, 2.2, so you can see that this is your second test case. All right, there is something wrong in actual result. See that this is a message is also typed over here, and this is your test case number 3. Fine, so finally क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले हमने क्या किया, वी क्रिएटेड अ मैवन प्रोजेक्ट, राइट, देन वी एडेड dependencies of Selenium, TestNG and extend reports. Okay, then you need to define these 3 classes, उसके objects create किए, and when you create your test, this is the line you need to write down, and after execution you need to write the flush वाला part. Alright, so I hope guys आपको ये पता चला है. ये वीडियो में एक ही वीडियो बना सकता था और तीनों चीज़ एक साथ बता सकता था, ओके, प्रैक्टिकल के साथ, बट हम एक एक वीडियो करेंगे बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ओके, नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू कि यही एक्टिविटी 3 अलग अलग टेस्ट केस में, अभी जैसे मैंने यहाँ एक ही केस बनाया, बट इफ़ आई हैव 3 टेस्ट केसेस एंड 1 टेस्ट केस, एक टेस्ट केस को हम पास करेंगे, दूसरे को फेल करेंगे, तीसरे को स्किप करेंगे. फाइन, और उसके बाद testng.xml के थ्रू we'll execute all 3 test cases and we'll see the report. Fine. So guys, if you have any questions, please let me know.